Dear friends, welcome all of you in my channel R Maths World. Today's session we see the arc of circle. What is meant by arc of circle? Here I draw a circle and I draw a line in this way. What we call this line? This is the center of circle. Suppose P, and this I give the name to this point of intersection of circle and this line A and B, and here I draw X. I give the name X. Then I say AXB is the arc of that circle, and another also this AYB is also arc of circle. Then what is meant by arc? Arc means what? What is meant by arc? This is called secant. What we call this line is secant. And these points are the points of secant and also points on circle. Therefore, the secant means these points and points on circle. These all the set of points is called arc of circle. Simply remember that this is the arc, means it is the part of perimeter of circle. It is the part of perimeter of circle in simple way. And this is a small arc, therefore it is called minor arc. It is called minor arc because it is small. And this from A via Y up to B, it is called major arc. Major arc. And also the measure of this arc is measure of central angle. Here again one definition we have to see, this called central angle. It is called central angle. P is the central angle, and this measure of P is equal to the measure of AXB, or vice versa. The measure of arc AXB is equal to measure of angle P. Means measure of minor arc. We know this, we studied in, I think, in 8th class. Measure of minor arc is equal to measure of central angle. Means if the central angle is of 60 degree, then the measure of arc AXB is also 60 degree. And the measure of major arc, measure of, from figure we write in this way, measure of minor arc. Minor arc is the arc M arc AXB is equal to measure of angle APB. From figure we write in this way. Again, measure of major arc is equal to, what is the measure of angular measurement of circle? Think, the measure of angular measurement of circle is 360 degree. Therefore, the measure of this major arc, means this, it is 360 minus this, means 360 minus this is called minor arc. Remember, these two formulas are here. One is this, minor arc is equal to central angle. In short, minor arc is equal to measure of central angle, and the major arc is equal to 360 minus minor arc. Remember this. Dear friends, we want to see the congruence of arc. What is meant by congruent arc? If the radius of the arc
radius of the arc are same, means OA and OB and OR are congruent. What I say, if the radius and measure of arc is same, then they are congruent arcs. देखिए दोस्तों, अगर रेडियस सेम है मीन्स द आर्क्स आर इन सेम सर्कल एंड द मेजर इज सेम. जब मेजर और रेडियस सेम होगा तब वो दोनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट आर्क कहेंगे. दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. Dear friends, we want to see the theorem. The charts corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. Means, here I draw this circle with center B. In this circle, if the arcs are congruent, means DQE and APC are congruent, then we want to show or we want to prove that chord DE congruent chord AC. अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है हमें प्रूव करना है कि चॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो हमने यहाँ पर लिखा गिवन इन सर्कल विथ सेंटर बी. व्हाट वी गिवन, द चॉर्ड, दिस चॉर्ड इज कॉन्ग्रुएंट विथ दिस चॉर्ड. arc DQE congruent arc APC. Then what we want to prove, chord DE congruent chord AC. दोस्तों अब देखना है हमें, we are given here arc DQE congruent arc APC. arc DQE congruent arc APC. Why given? बराबर है. नाउ अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका सेंट्रल एंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा. इसका मतलब ये कि दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट विथ दिस एंगल मीन्स एंगल DBE congruent angle, DBE congruent angle ABC, because corresponding central angle of congruent arc, corresponding central angle of congruent arc. करस्पॉन्डिंग एंगल है वो किसका, कॉन्ग्रुएंट आर्क का. इसलिए नाउ हियर इन ट्रायंगल दिस DBE and triangle ABC, this segment DB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB. क्यों कॉन्ग्रुएंट आएंगे DB और AB? सोचिए, DB क्या है, उसकी रेडियस है, AB भी क्या है, रेडियस है. और अगेन दिस साइड BE, सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट कौन सा आएगा, BC. दोनों के लिए रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ये कॉन्ग्रुएंट होगा दो साइड, और इनमें का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हमने यहां पर बताया हुआ है. एंड एंगल DBE
कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी, इसे लगे तो 1 नंबर दीजिए, ताकि यहाँ पर फ्रॉम 1। अगर दो साइड्स एक ट्रायंगल की दो साइड्स और उनमें का एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट विद द other sides of other triangle and angle between them, then these triangles are congruent with, by which test? Triangle DBE, congruent triangle ABC। दो साइड और उनके बीच का एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो ट्रायंगल कौन से कसौटी के अनुसार कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड एंगल साइड टेस्ट। देखिए, 2 sides and angle between them, 2 sides and angle between them, 2 sides and angle between them, therefore the triangles are congruent with this test। और कॉन्ग्रुएंट एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये कि DE कॉन्ग्रुएंट AC, हेंस तो यही हमें यहाँ पर रीजन लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, हेंस द प्रूफ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।